Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 92 for that topic sexual reproduction in flowering plants. We have seen embryonic development, we have seen that post embryonic development also, okay? Endosperm of the seed, how it is developed by three different methods. Then embryo, how it is developed, that also we have seen. Now that embryo of the seed which is formed differs during the developmental stage only in the dicot plants and monocot plants. And that's why the classification is given rightly like that. Dicotyledonous and monocotyledonous plant. द्विदल और एकदल कहते हैं उसे. So what is the difference in that embryonic structure or embryo structure that we shall learn? Here that fully developed. That first of all zygote is there, we know, oospore. Then that develops into the multicellular embryo, octant stage, etc. 2-celled, that 4-celled, 8-celled. Then multicellular embryo is there, globular. Then it becomes heart-shaped, and finally it becomes horseshoe-shaped embryo. That we have discussed in the earlier lecture. Now that heart-shoe-shaped embryo is differentiated in the dicot plants like this. That dicotyledonous embryo has got the structure like this. This embryo has got embryonal axis. ये embryonal axis है उसका. Okay. And that embryonal axis shows two cotyledons. 3 parts है इसमें. One is the cotyledons, then other is that radicle, and third is the plumule. ये 3 parts important है. Plumule, then that radical, and then that, two cotyledons. So what two cotyledons you are watching here? These are that two structures which are going just above that embryonal axis, and they are called as the, two cotyledons. So that cotyledons contain the reserve of food material many other times, and also that grows into the first leaf there of the plant when the seed germinates. Okay, so that cotyledons are important. दो है. Then वो भी हम learn करेंगे. In some of the plants that cotyledons are very thick and fleshy. In some of the plants they are very papery. तो वो क्यों होते हैं? Because endosperm is engulfed by that cotyledons, इसलिए वो swollen हो जाते हैं. आपको मालूम है एग्जाम्पल ग्राम और एग्जाम्पल पी, ग्राउंडनट, ये जो है वो कैसे है? पर्टिकुलरली दैट इज नॉन एंडोस्पर्मिक सीड्स, हम देखेंगे उसको. तो ये दो कॉटिलिडॉन्स हैं, एंड देन जस्ट एट द लेवल बिलो दैट पर्टिकुलर कॉटिलिडॉन्स, द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो विच इज swollen is called the hypocotyl, और इसके ऊपर जो पार्ट है that is called as the epicotyl. यानी कॉटिलिडॉन्स के इपी यानी अबो, कॉटिलिडॉन्स के लेवल के ऊपर, then that is called as epicotyl. ये कॉटिलिडॉन्स के लेवल उसके ऊपर, that is epicotyl. और कॉटिलिडॉन्स के लेवल के बिलो जो आता है that is the hypo यानी lower. So in embryonal axis, epicotyl, hypocotyl. Epicotyl means above the level of cotyledons, and hypocotyl means below the level of cotyledons. Okay, तो ये जो है epicotyl, hypocotyl अच्छी तरह से समझ लो. Try to understand. क्योंकि इसका यूज हमको होने वाला है during when we learn the germination of seed. Germination of seed आपने 11th में लर्न किया होगा. So at that time hypogeal germination, epigeal germination ऐसा आपने देखा होगा. Okay, तो याद करो अच्छी तरह से. वहां पे ये टर्म्स यूज होते हैं, epicotyl and hypocotyl. Okay, then another thing is that the tip of the epicotyl is that very important structure. What is the name of that? That is called the plumule. उसको plumule कहते हैं, प्रांकुर कहते हैं. Okay, that tip of the epicotyl, that shoot apex कहते हैं उसे, that is known as the plumule. बहुत ही important है वो plumule, because that is going to develop into the shoot system at the time of germination of seed. And then that part below the hypocotyl is known as radicle. The radicle gets covered by the structure known as root cap.
तो आपको अभी बिल्कुल अंदाजा आया होगा दैट रेडिकल इज दैट पार्ट ऑफ द सीड एम्ब्रियो विच ऑन जर्मिनेशन प्रोड्यूसेस रूट सिस्टम. इनफैक्ट ये पहले सीड जब जर्मिनेट होता है तो पहला जो अंकुर बाहर आ जाता है दैट इज एक्चुअली द रेडिकल. ये रेडिकल रहता है. ओके, द रेडिकल फर्स्ट कम्स आउट. स्प्राउट ग्रेन्स को आपने देखा होगा, मटकी, ओके, या दैट पीज एसेट्रा. तो पर्टिकुलरली चवड़ी वगैरह, तो व्हेनेवर दैट जर्मिनेट्स, तो मूंग वगैरह, तो क्या होता है उसके बाहर एक अंकुर आ जाता है. सो दैट इज एक्चुअली द रेडिकल. इट हैज गॉट अ ग्रेट स्ट्रेंथ माय स्टूडेंट. है स्ट्रेंथ, उसका पोटेंशियल बहुत ही ज्यादा है. क्योंकि देखो ये सॉइल में जाने वाला है, और सॉइल में क्या ऐसा बोर किया है का? वैसा बोर नहीं किया है वहां. ऐसा ऑलरेडी एक ऐसा होल बना के रख दिया है, वो बोरवेल में बनाते वैसा वैसा नहीं है. सो इट हैज टू मेक इट्स ओन वे. दैट इज द लाइफ स्टाइल. रिमेंबर, हमको हमारा वे जो है, पाथ जो है बनाना है हमारे करियर का. तो वो देखो कितना भी कठिन हो, इट पियर्सेस दैट सॉइल. यानी वो रूट टिप या रेडिकल का टिप वो कितना पोटेंस होगा उसका अंदाजा लगाओ. हाउ पोटेंस इट इज. इट पियर्सेस द सॉइल एंड गोज डीप डाउन. जैसे जैसे वो नीचे जाएगा दैट विल स्टार्ट टू प्रोड्यूस द फर्स्ट रूट देयर. उसे हम कहते हैं टैप रूट और प्राइमरी रूट. वो वहां से तैयार हो जाता है. इधर जब किसी प्लांट में क्या होता है दैट प्राइमरी रूट विच इज फॉर्म डाइज अवे एंड देन अनदर रूट्स अराइज फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम. ये अलग स्टोरी. बट मेन रूट और प्राइमरी रूट इज फर्स्ट फॉर्म बाय दिस रेडिकल एंड हैव गॉट ए ग्रेट पोटेंशियल. तो इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूं, रादर देन ईटिंग दैट स्नैक्स और दैट जंक फूड मत खाओ, स्प्राउट ग्रेन्स खाओ. एवरी डे आस्क योर मॉम to have that sprout grains in the. कुछ नहीं होता है, वो जो सीड्स रहते हैं, मूंग है या मटकी है या वो चवली है, तो वो उसको क्या करना है पर्टिकुलरली, you have to just take that and sow it into the deep into the water earlier day. Next day they will get swollen. तो वहां पे वो उसके अंकुर भी दिखेंगे आपको. and eat that particular one feast every day. That gives tremendous energy. बहुत सारी एनर्जी उससे मिलती है. ओके, द वेजिटेरियन में बहुत अच्छा है. सो पर्टिकुलरली बिकॉज ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द रूट दैट यू अंडरस्टूड. देन हाइपोकॉटिल के लोअर में ये रेडिकल है. रेडिकल फॉर्म द रूट सिस्टम कवर्ड बाय द रूट कैप. इसको प्रोटेक्शन के लिए रूट कैप रहता है. वैसे ही प्लिम्यूल जो है, यानी पहला अंकुर आएगा वो रूट सिस्टम बनाएगा. एक बार वो रूट सिस्टम बनने लगा, देन द अनदर पार्ट आल्सो कम्स आउट. And that another part is known as what? That is known as the shoot system. And that is developed from which structure there? That is developed from plumule. Plumule develops the shoot system. Plumule जो है वो shoot system बनाता है at the time of germination. Okay? So I am sure that you have understood this part very properly. तो ये डाइकॉट का एम्ब्रियो इस लेक्चर में अच्छी तरह से लर्न कर लो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी शैल लर्न द दैट मोनोकॉटिलिडनस एम्ब्रियो. ऑलरेडी द स्ट्रक्चर इज हियर, आई हैव शोन. तो मोनोकॉट का एम्ब्रियो हमें अच्छी तरह से लर्न करना है, वो नेक्स्ट लेक्चर में. सो डू गिव द लाइक्स एंड शेयर टू माय चैनल, माय दिस वीडियो, एंड डू सब्सक्राइब टू माय कार्टेसो चैनल. एवरी डे यू विल गेट one multiple choice question also in the form of the short. So keep watching that shorts also and you will get benefited for NEET. Okay, thanks a lot.